you're watching the explosive exclusive with me, Rahul Shivshankar. 25 days back. 25 days back, viewers, processionists celebrating the Hindu New Year was set upon. Many said that they were attacked in Karauli in Rajasthan because they were provocateurs. Video evidence did not establish this. In fact, the video evidence that Times Now has brought out shows that this procession, which was peaceful, was attacked without much provocation. Viewers, this we know after accessing the FIR filed by the Rajasthan police on the Karauli riots. In that FIR, viewers, an individual called Matloob has been singled out as the mastermind. Now, who is Matloob? Matloob, viewers, is part of the larger political ecosystem in Karauli. He is an independent corporator who is supporting the local Congress-ruled corporation. In other words, he's an ally of the Congress party. There are videos of him directing the alleged rioters. You can see him on your screens. You can also see a large number of his relatives who were also out there conspiring to target the processionists. In other videos, viewers, the police is seen given a free pass to Matloob and the other rioters. For 25 days, despite his name being in the FIR, despite the constitution of an SIT, this man is untraceable. But viewers, Times Now is on the trail of the Yatra attacker. Matloob and kin plotted mayhem in Karauli. They have been booked, but for some reason, despite having been caught on camera leading the riots, the police haven't located him. For 25 days, viewers, he is not located. Viewers, we can tell you that Times Now has now been tipped off about his coordinates. We know of his presence in Rajasthan, and this raises some questions. Let me go across to Bhavar, also to Pranesh from the newsroom, to put this story into context. First, Bhavar, आप कुछ दिनों से इस शख्स के पीछे लगे हुए हैं, किधर है, क्यों भागा हुआ है, कौन बचा रहा है, किसके छत्र छाया में ये अभी रह रहा है, ये आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आप अब काफी करीब पहुंच गए हैं सच्चाई के। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर मतलूब अभी भी राजस्थान में ही है, भारत से बाहर नहीं है, कोई लोगों ने कहा था नेपाल भाग गए, कई लोगों ने कहा था कि वो राजस्थान में नहीं मुंबई निकल गए, कई लोग ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में गायब हो गए, ऐसी ऐसी बातें बताई जा रही थी। अब आपको पता लग रहा है कि ऐसा नहीं है, न्यारे ही हैं वो आपके। तो ये पुलिस पकड़ क्यों नहीं पा रही है, इसका रहस्य बताइए। देखिए, ये रहस्य तब समझ में आता है जब हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं। जिस तरीके से हमने दिखाया कि किस तरीके से मतलूब फ़ोन पर बात कर रहा है और दंगे होते हैं, उस दौरान पुलिस के सामने मतलूब होता है लेकिन पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है। पुलिस को जहां डिप्लॉय करना था वहां पुलिस डिप्लॉय नहीं होती और आराम से दंगा होने दिया जाता है। तो ये तय है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के ऐसा दंगा नहीं होता। मतलूब कौन? मतलूब एक पार्षद जिसने कांग्रेस को समर्थन दे रखा है और सभापति वहां पर उनका है।
ऐसे में उसको बचाने का प्रयास अगर कोई करेगा तो वो यहाँ पर कांग्रेस समझ में आती है। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण अगर हम इसमें सोचते हैं तो वो ये समझ में आता है कि जिस तरीके से अभी 5 राज्यों के जो चुनाव हुए वह हमने देखा कि कांग्रेस से मुस्लिम वोट जो परंपरागत वोट था वो छिटका है। ऐसे में आने वाले चुनाव में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि राजस्थान में भी वो वोट छिटके, क्योंकि अशोक गहलोत यहाँ राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं। खासतौर पर कांग्रेस में ये शब्द है कि अशोक गहलोत राजनीति के जादूगर हैं और वो कोशिश करेंगे कि उस चीज़ को अपने हाथ से नहीं छिटकने दें जो उन्हें ताकतवर बनाती है। जिस तरीके से वो लगातार तुष्टीकरण के आरोप में घिरे रहते हैं उसकी एकमात्र वजह यह भी है क्योंकि राजस्थान में अगर उन्हें सत्ता बचानी है तो उन्हें अपने परंपरागत उस वोट बैंक को साधना पड़ेगा जो अभी हाल ही में जिन राज्यों में चुनाव हुए वहाँ से छिटक कर दूसरे दलों की तरफ आगे बढ़ा है। ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहेगी कि उनका ये वोट बैंक छिटके। लिहाजा कांग्रेस के वो तमाम नेता जो उस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे, खासतौर पर उसी समुदाय विशेष के नेता जिनका संरक्षण मतलूब को इस समय प्राप्त है, हम हमारे सूत्रों से लगातार संपर्क में हैं और सूत्रों से ये बात सामने आ रही है कि राजनीतिक संरक्षण मतलूब को प्राप्त है और वह कहीं नहीं गया है, वो राजस्थान में है। अलग अलग लोकेशन उसकी लगातार मिल रही है। पुलिस की 3 टीमें उसको सर्च तो कर रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जानबूझकर उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुलिस की टीम दिखाने के लिए काम तो कर रही है, ठीक वैसे ही जैसे दंगों में करती रही है। इस दंगे में जिस तरीके का काम पुलिस ने किया उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस काम कर रही थी। अब जाकर जब हमने खबरें दिखाई, आज रामेश्वर दयाल जो एसएचओ हैं उनको लाइन में भेज दिया गया है। ये बात अलग है, ये खानापूर्ति कही जा सकती है क्योंकि 25 दिन बाद पुलिस को याद आती है कि रामेश्वर दयाल ने गलत किया। हम लगातार खबरें दिखाते रहे, एक एक सबूत लेकर आते रहे। हमने दिखाया कि मतलूब के घर के आसपास और उसके भाई की जिम से किस तरह पत्थरबाजी हुई। मतलूब जब दंगों में लोग इधर उधर भाग रहे थे तब वह फोन पर बात कर रहा था। ऑर्डर ले रहा था या दे रहा था ये अभी अनुसंधान का विषय है, लेकिन ये तय है कि मतलूब अभी उन राजनेताओं के राजनीतिक संरक्षण में है जिसको वोट बैंक का फायदा है, क्योंकि यही फायदा मतलूब को अभी सुरक्षित रखे हुए है। 25 दिन बाद भी मतलूब गिरफ्त में नहीं है। Well, viewers, just to summarize what Bhavan is telling us, he listed basically 3 reasons for why he believes that perhaps the administration is not serious about apprehending Matloob. Number 1, because of his obvious political connections. Number 2, viewers, because the Congress is worried about losing Muslim support. Bhavan says that in the recently concluded round of elections, especially in Uttar Pradesh, Muslims were seen to have drifted away from the Congress party. The Chief Minister Gehlot, who is called a magician, an election magician, knows how crucial that particular vote can be in tight constituencies, tightly held constituencies in Rajasthan. Therefore, doesn't want to, at least this is a surmise, doesn't want to upset the calculations, the equations with that community. The third point, viewers, which is something that is very interesting, and the police itself realizes that perhaps if Matloob is arrested, he might sing, he might name individuals who have given him a free hand, and that could be potentially very embarrassing for the same law enforcement agencies that tries to give us the impression that it is serious about apprehending those who targeted the procession Karauli. Now, viewers, why is there this apprehension that the police is going soft? This is because on our cameras, we are seeing the police not cracking down, in fact, abetting in the rioters, in the rioting rather. Here are some visuals that we accessed a few weeks ago and we brought to your notice. What is the police saying in these pictures? And we're going to boost the net. They're saying, leave. You've done what you had to, now leave. We are giving you safe passage. Ho gaya. Chalo, chalo. Let's listen to this.
Now, viewers, you watch those videos. It's quite apparent that the police, in fact, had no intention of apprehending any of these rioters. In fact, on camera, they're asking them to leave. They've seen them throw stones, which is an offense. You cannot incite. You cannot incite. You cannot provoke. Especially in a tense situation like this. This is a cognizable crime. It is happening right before where the police are standing, yet no action was taken. Now, Pranesh, this is mystifying. The man is supposedly in Rajasthan. He hasn't fled to Nepal. He hasn't fled to any other jurisdiction where the Rajasthan police doesn't have influence. Yet, this man is free. He changes his location frequently. That is why it's become very difficult to pin him down, even though Times Now roughly knows where his safe houses are, and we will have a big breakthrough in this story in the next 24 hours. But Pranesh, this is rather strange, curious, bizarre, call it what you want to. Absolutely, Rahul. For 25 days and 607 hours after the Karauli carnage, the Gehlot government would have us believe that there is a Tora Bora range inside Rajasthan, and this man, Matloob Ahmed, has built himself a fortified cave just like Osama had done to evade US forces. But we know that that is not true. Now the question is, and just to add to what Bhavar was saying, it is clearly this. Is it that Matloob Ahmed is hiding, or the state has hidden Matloob? Now this is important because the inaction by the Gehlot government so far forces one to say so. What has the government done? The government could have released wanted posters. Times Now has put a timestamp. Times Now is saying that for 25 days, the whereabouts of this man is not known. But look, the Gehlot government is not amused. They don't care where Matloob is, because this is the chalo chalo bhag jao mentality playing out. And the people who were present at the spot, the cops who were there in uniform, have been caught on camera saying this chalo chalo bhag jao. And now the Gehlot government is giving out the message, right. Chalo chalo chupe raho, chalo chalo bahar mat aao. Well, look, we don't want to get ahead of ourselves. We are not going to make any definitive accusations, but it is beginning to look rather strange. भंवर, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप ये पूरी स्टोरी पे आपने काफी इन्वेस्टिगेशन किया है। और भंवर, मुझे ये बताइए, आप एक्सपीरियंस रिपोर्टर हैं, पहले भी कई साल पहले एक और शख्स थे, बिट्टी मोहिंती, उन्होंने भी राजस्थान में एक करतूत किया था, वो एक क्राइम किया था, रेप का क्राइम। राजस्थान में भी वो पकड़े नहीं गए थे। बाद में कई साल बाद, कई महीने मास बाद वो पकड़े गए थे। टाइम्स नाउ ने रिलेंटलेसली उन पे फोकस बनाया रखा था। तो मुझे बताइए कि राजस्थान में ये क्या है जहां पर अगर कोई आरोपी कुछ करता है वो अक्सर देखिए गायब हो जाता है। क्या कुछ वहां पर डिफिकल्ट होता है सिग्नल, फोन सिग्नल ट्रैक करना, दूसरे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स, उनको पकड़ना, कैसे होता है ये? देखिए, ये इसमें कहीं ना कहीं अगर हम इन्वेस्टिगेशन पार्ट की बात करें कि जिस तरीके से मतलूब की बात है, मतलूब 2 तारीख को पुलिस के सामने झगड़ा होते हुए सब कुछ देख रहा है, कर रहा है। उसके जिम पर पत्थर हैं, उसके घर से पत्थर हैं, उसके तमाम कजन्स जो हैं वो पत्थर फेंक रहे हैं और पूरा हंगामा चल रहा है। लेकिन पुलिस क्या कर रही है? मूक दर्शक है। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि पुलिस मूक दर्शक क्यों है? क्या पुलिस डरी हुई है? ऐसा नहीं है। करौली जिला है और जिले पर पूरा मैन पावर होता है, जिले पर एसपी बैठता है। वहां अगर इस तरह के हालात हो जहां पुलिस मूक दर्शक हो जाए, ये समझ में आ सकता था। किसी ग्रामीण इलाके में सब हो रहा होता, वहां थाने पे मैन पावर नहीं है, वहां उनके पास तमाम जो उपकरण है वो नहीं है, ये माना जा सकता था। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पर अगर ऐसा है, ठीक वैसे ही जैसे आपने मोहंती की बात की, मोहंती जयपुर में थे और जयपुर से गायब हो गए। जयपुर राजधानी, जहां से पूरे स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर, पूरे स्टेट की पुलिसिंग होती है, वहां मोहंती नहीं मिल रहे हैं। और मोहंती कोई छोटे मोटे आदमी नहीं, एक आईएएस अधिकारी, वो वहां नहीं मिलता है और पुलिस उसको लगातार तलाशती रहती है, बहाने बनाती रहती है।
मीडिया को यह खबर रहती है सूत्रों के मुताबिक कि कहां कहां ट्रेसिंग चल रही, कहां कहां वो ट्रैक हो रहे हैं, कहां कहां पहुंच रहे हैं, लेकिन पुलिस को नहीं मिलते हैं। जैसे कि हमने जीतू शुक्ला वाली बात करी, जीतू शुक्ला के पास आधी रात को हम थे लेकिन पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि जीतू शुक्ला पर जो आरोप तय किए गए वो कहीं ना कहीं उन सबूतों के आधार पर उस चीज को डिनाई करते हैं, लेकिन पुलिस ने आरोप तो तय किए थे। पुलिस उस तक पहुंचती तो सही। अगर टाइम्स नाउ वहां पहुंच सकता है तो पुलिस क्यों नहीं पहुंच सकती है? टाइम्स नाउ अगर बता सकता है कि मतलूब राजस्थान में, तो पुलिस क्यों नहीं उसको सर्च कर सकती है? टाइम्स नाउ अगर ये बता सकता है कि मोहंती फला फला जगह गए हैं। बहुत अहम सवाल पूछे आपने, बहुत अहम। और देखिए, मोर पावर टू टाइम्स नाउ व्यूअर्स। We are going to get this individual. For 600 plus hours, the man is untraced. Pranesh has given you the exact math, 607 hours. He must be eating. He must require money to survive. Someone is providing him with all he needs to sustain himself while he's on the run. And that someone, viewers, is a greater abettor in what we saw in Karauli than even Matloob or the police. This is a very serious matter. And I want to bring in Lokesh Jindal and Guruprakash, national spokesperson of the BJP, and Lokesh Jindal, leader of the Congress. Mr. Jindal, the police knows if that Matloob is caught, he might spill the beans, and this entire narrative that was built about who was the provocateur, who wasn't the provocateur, who is shielding whom, it'll all be out. So best, don't arrest Matloob. If he's in Rajasthan, why for 25 days, despite his name being in the FIR for inciting riots that led to a communal situation, is this man free? Lokesh Jindal. And that doesn't speak well about your ability to govern a state. Good evening, Rahul. Now, this is all half-truth that you have been showing till now, because if you look at what has been happening in Rajasthan, we see that there have been 4 accused that have been identified. First is Rajaram Gujar, who was the former city council chairman. Second is Hindu Sena state president Sahib Singh Gujar, Anchi, and the 4th one is Matloob Ahmed. And the state administration has started attaching the property of all those who have been accused. The state police has already registered 41 FIRs, and on the basis of these FIRs, action has been taken. Over 144 people have been identified, and on the basis of the court's order, we are waiting for the warrant so as to have all these people arrested. Moreover, the district 25 days, 600 plus hours, you're waiting for a warrant? In a serious case like this? See, there is a due process of law, a procedure that Mr. Lokesh Jindal, who are you kidding on national TV? I'm simply stating the fact. You have booked him under a cognizable offense, a serious offense. Why are you not talking about Sahib Singh Gujar? Why are you? Listen, 1 minute. I have not booked. 1 second, just 1 second. Lokesh Jindal, I have not booked Mr. Matloob Ahmed. I have not made up his visuals and located him at the scene of the crime. I have not given him a free pass. You ask your Gehlot, the chief minister there. You ask him, don't ask me. Next you will be asking the Prime Minister of the United States, or the President of the United States and the Prime Minister of Britain. He was just here. It's ridiculous. Let me bring in Guruprakash, national spokesperson of the BJP. What do you make of Lokesh Jindal's response this evening? No. See, Rahul ji, today it's Karauli, yesterday it was Dosa, day before it was Alwar. Rajasthan has clearly become a blast furnace for Hindus. Dalits are being killed on an everyday basis. They are not allowed to use horses for their wedding ceremonies. Dalit women are being brutally raped on an everyday basis. Rajasthan is topping the list in terms of atrocities and violence against Dalits. The police, as you showed in the video, the police is clearly hand in glove with the writers. Well, what else is there to speak now? Well, I'm actually mystified. I'm mystified. Look, the BJP is going to say what it has to say. The Congress, as you heard, viewers, selective, extremely selective. The point is that every day we delay, justice is denied.
that much longer. That much longer. Why? In this state of Rajasthan, Mr. Gehlot felicitates at an iftar ceremony rioters. There are rioters at his iftar party, and those are the pictures. And another one is on the run. And the media is being blamed for being selective. Viewers, if this is not a travesty, what is it? I don't know. I really don't know. Times Now, however, will do the job of the Rajasthan police. We will locate Matloob. We're very close to getting him. It's only a matter of a few more hours. We need to move on. Delhi viewers, in focus.